Good morning, my dear students. So straightforward, I'm coming to the sum. We are discussing about the fundamentals or the basics of partnership. And till the last class, we have discussed about the journal entries related to profit and loss appropriation account, as well as how the loss is to be shared in the shared from the profit and loss account. So today we will go with the profit and loss appropriation account. So remember that. Just a minute. You can remember this note also. The other day also I told you that in case of profit, we have to transfer the balance to the profit and loss appropriation account, and you'll be distributing it according to the question. But in case of loss, do not transfer it to the profit and loss appropriation account, because the loss will be directly transferred from the profit and loss account. Okay, directly transferred from the profit and loss account. Now coming to the next one, let's see the pro forma of profit and loss account, how it will appear. You have already come across all the items of profit and loss account in your previous class, class 11, where you have learned how to prepare the profit and loss account. So there's nothing new here, exception of some of the items. So whatever items you have learned in the previous class, that is there, and it will be hardly coming here, to be very frank. If it comes, it will be related to that particular sum what you have learned in the previous class. So when you come to this profit and loss account in the partnership form, how it is treated. So what are the things you'll get? First of all, you'll get the profit by profit brought down. Okay, it will not be net profit because it requires some more adjustment. That is why by profit brought down. And what you have to do is that one by one you have to pay first of all the interest on partner's loan. Students, remember there are two very important items related to partner which are shown in the profit and loss account. Generally, all the items related to partner are shown in the profit and loss appropriation account, exception of two. ठीक है, सारे आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर क्या होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है. जैसे सैलरी हो गया पार्टनर का, कमीशन हो गया पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये सब. लेकिन ऐसा दो आइटम है जो पार्टनर को रिलेट करता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता. उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तुम लोग पहले दिन वाला जो वीडियो था उसको अगर ध्यान से देखोगे तो इस कंसेप्शन के बारे में पता चल जाएगा. सो what is that? Interest on partner's loan and rent paid to partner, these are the two items related to partner which are coming in the profit and loss account. Okay, which are coming in the profit and loss account, not in the profit and loss appropriation account. What are the two items? First is the interest on partner's loan, and the second one is the rent paid to partner. Okay, these are the two items. Let's come to the next one. Salary to manager. Okay, salary to manager, commission to manager, these are the outsiders. This type of items you may get it, so you have to pay that. And ultimately you have to do the balancing. Now if the credit side is more, then the profit balance will go to the profit and loss appropriation account, profit transfer to profit and loss appropriation account in case of profit. But if the debit side is more, अगर ये debit side ज़्यादा है तो कहाँ पे होगा? By loss transfer to partners capital और current account, पार्ट ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. ठीक है, ए अगर है, बी सी ऐसे एग्जांपल बोला है. ठीक है, सो ऑल द लॉस विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, हम लोग देखें ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस बेसिस में ट्रांसफर हो जाएगा. एक रेशियो दिया हुआ होता है जिसके बेसिस में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा, उस बेसिस में ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, क्लियर है? तो ये यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर लॉस होता है. Now if there is profit, this profit will come in the profit and loss appropriation account here. By profit and loss account से आएगा. ठीक है, net profit यहाँ पे आ गया. This is the profit coming from the profit and loss appropriation account and we call it net profit. ठीक है, उसे हम लोग net profit बोलते हैं. क्लियर है? net profit. तो अब हम लोग एक एक करके पार्टनर को सारा उनका पैसा देंगे. जैसे फर्स्ट थिंग वी कैन गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, उसको इंटरेस्ट चाहिए, so we have to pay interest on capital. Since it is a loss, so it will come in a debit side. You have to mention it here debit and this side credit. Then
partner's salary you have to give, then partner's commission you have to give. Okay, and what you have to take from partner? Interest on drawings. Remember, drawings will not come here, only interest on drawings will come. Capital will not come here, only interest on capital will come. Salary, partner salary will come, partner's commission will come. Then transfer to reserve will come. Then ultimately you have to do the balancing of both the debit and the credit side. Okay, obviously in most of the cases the credit side will be more. In case the debit side is more, the treatment of that is totally separate. We'll see it later. Okay. Other than that, always the credit side will be more. If the credit side is more, you are going to do the balancing, and this particular amount will be called, ये वाला जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं divisible profit. ठीक है, we call it divisible profit. And how it will be transferred? In the profit sharing ratio, it will be transferred to the partner's account. The partner account can be capital or current account. We'll be discussing about that also later. ठीक है, so I hope the performer is clear to everyone. Okay, once again I am repeating one important concept here. The conception is about the profit and loss account, profit and loss adjustment account, and profit and loss appropriation account. Okay, there are three stages here. So first of all, in the first stage, we are going to get the profit and loss account, which is compulsory for all the organizations. They will prepare it and will put all the items as we have learned in class 11. Then comes the profit and loss adjustment account. It is a temporary account. It is used to rectify the error. Okay, if there is any error related to any past adjustment, if the partner has done any mistake, or they want to find out the value of their assets and liabilities. Okay, and they want to find some changes in that, they can prepare profit and loss adjustment account. This we'll learn in the subsequent chapters. Now it is not required. Then the third stage is that profit and loss appropriation account. We are going to learn about this one. Okay, stage 1 and stage 3 here we are going to learn here. So the profit and loss appropriation account is an account where we show the distribution of the amount receivable by the partners. Okay, all the items that are receivable by the partners will be shown in the profit and loss appropriation account. So now what is the basic difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account? So first thing, profit and loss account, we prepare it both in the case of net profit to find out net profit and net loss. Okay, but the profit and loss account, a profit and loss appropriation account, is only prepared to show the distribution of net profit. Okay, which is not prepared to show the distribution of net loss. Clear? The profit and loss account is mainly for a business organization who is having only the sole trading. It will end up for the sole trading. Okay, but the profit and loss appropriation account is an extended account. Okay, all the business will have profit and loss account, but profit and loss appropriation account is prepared specifically for a partnership firm to show the distribution of the profit. Okay, then in profit and loss account, remember, all items that are compulsory to pay, you have to pay that item. Okay, those expenses need to bear, तुम्हें देना ही पड़ेगा. All those items will come in the profit and loss account. ठीक है, देखो पार्टनर रिलेटेड क्या होता है, तुम पार्टनर को पैसा अगर कम पड़ गया तो नहीं देने से भी चलेगा, क्योंकि वो मालिक है, उसको ही बेयर करना है अगर लॉस होता है तो. लेकिन बाहर वाले को तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि पैसा नहीं है, नहीं दे सकता. यू हैव टू गिव दैट. सो ऑल द आइटम्स विच आर हैव टू गिव, मतलब देना ही पड़ेगा, that will come in the profit and loss account. But those items which are not compulsory to pay, like if you have the money then you can pay, if you don't have the money no need to pay, उसको appropriation बोलते हैं. ठीक है, appropriation. So उसको दिखाया जाता है profit and loss appropriation account में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सब. ठीक है, ये अगर प्रॉफिट होता है तभी दिया जाता है, नहीं होने से देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइटम कौन से आते हैं? You have to pay that amount, we have to bear the expenses compulsory, so that will come in the profit and loss account. And those items which are not compulsory will come in the profit and loss appropriation account. Then coming to the next one, profit and loss account is prepared on the matching concept basis, where all the revenue is matched with the expenses. And the profit and loss appropriation account is not prepared on the matching concept basis, it's just prepared to show the distribution in the profit. ठीक है, और बच्चों याद रखना कि
ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू पार्टनर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी पेड टू पार्टनर दो अलग चीजें हैं। रेंट पेड टू पार्टनर उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या दिखाते हैं उसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑल द आइटम्स विच आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर हैविंग द फीचर ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर ऐसे भी समझ लो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो एक्सपेंसेस, वो आइटम जो है उसको तुम्हें देना ही पड़ेगा, उसको तुम्हें बेयर करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट हो या ना हो। जैसे दुकान का भाड़ा, अगर हम लोग दुकान में हैं, दुकान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका भाड़ा हमें देना ही पड़ेगा, चाहे मेरे बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस इनकर कर रहा है। सेम वैसे ही जो मेरे लेबर हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, मुझे उन्हें वेजेस या सैलरी देना ही पड़ेगा, चाहे मेरा बिजनेस प्रॉफिट करे या ना करे। तो ये सारे आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, और इसी के लिए इन्हें बोला जाता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास प्रॉफिट हो या चाहे तुम्हारा लॉस हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो सारे आइटम्स आते हैं जो प्रॉफिट में अपना हिस्सा मांगते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो उन्हें देना पड़ेगा, जैसे सैलरी देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, कमीशन देना है पार्टनर को। प्रॉफिट होगा तभी ना मिलेगा, लॉस होने से कहाँ से उसको दोगे। ठीक है, क्लियर है। ओके। और ट्रीटमेंट टू सैलरी टू पार्टनर जो होता है वो इंटरनल पार्टनर होता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लॉस हुआ तो नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा तो देंगे। ठीक है ना, इसी के लिए, और अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है तो देंगे। तो इसी के लिए याद रखना कि ट्रीटमेंट जो होता है सैलरी टू पार्टनर का, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। ठीक है, तो रेंट पेबल टू पार्टनर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सैलरी टू पार्टनर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये चीज़ याद रखना बच्चों, एक सिंपल स्टेप है। कुछ कुछ आइटम्स मार्क किए हैं यहाँ पे, कुछ आइटम्स हैं, और कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा वैसे टिक किया हुआ है। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, रेंट पेड टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सैलरी टू मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन टू मैनेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट एंड कैपिटल एप्रोप्रिएशन आइटम होता है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट एंड कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बता के देगा। ओके, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, फिलहाल इग्नोर करो, सिर्फ समझो कि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। चार्ज का मतलब क्या है वो हम लोग बाद में अच्छे से सीखेंगे, थोड़ी देर पहले भी बोला था मैंने, फिर भी उसको अभी रहने दो, हम लोग सीखेंगे अलग से उसको। सैलरी टू पार्टनर वही, अगर एप्रोप्रिएशन होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, चार्ज होने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। ऑल द आइटम्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, whereas all items which are appropriation of profit will be shown in the profit and loss appropriation account. Commission to partner, if it is charge, again it will go in the profit and loss account. अगर appropriation होगा तो appropriation account में जाएगा, profit and loss appropriation में। Then commission to outstanding expenses, outstanding expenses is a charge against profit, it will go in the profit and loss account. Interest on partners drawing, profit and loss appropriation account. Transfer to reserve, profit and loss appropriation account. Distribution of loss, profit and loss account. And distribution of profit, profit and loss appropriation account। ऐसे होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा पार्ट जिसमें हम लोग को समझना है कि कौन आइटम कहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू पार्टनर, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग आसान सा समझ के। क्या है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को जो है और जूम कर लेता हूँ। सो क्या है यहाँ पे, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2018 with capital of 50,000 and 40,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी ने स्टार्ट किया है बिजनेस 1 जनवरी 2018 को, उनका कैपिटल है 50,000 एंड 40,000। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ए को मिलेगा सैलरी, पार्टनरशिप डीड में बता दिया कि ए को सैलरी देना है 500 रुपीज पर मंथ। दैट मीन्स ईयर में कितना हुआ, 500 इंटू 12, 6,000 रुपीज। ए को सैलरी एनुअली हम लोग को 6,000 देना है। एंड इंटरेस्ट टू बी अलाउड, इंटरेस्ट अलाउ करना है ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे कितना, 10% पर एनम। सो 10% ऑफ 50,000, 5,000 ए को मिलेगा,
10% ऑफ 40,000 4,000 होता है, वो बी को मिलेगा एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन 3:2 रेशियो। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द 3:2 रेशियो, ठीक है। Then the last one, for the year ended 31st of March to, sorry, 31st of December 2018, farm made a profit of 70,000 before allowing as salary and interest and capital. Before giving salary and commission, salary and capital, interest and capital, the profit was 70,000. होना भी चाहिए। पार्टनर को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अप्रोप्रिएशन बनाने की जरूरत कोई मायने नहीं होता है। इसी के लिए बच्चों याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में अगर कोई पार्टनर रिलेटेड आइटम पेमेंट हो चुका है तो उसको ऐड करके दोबारा से उसको दिखाना, माइनस करना यहाँ पे, ठीक है, अकाउंट में दिखाना। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जैसे बता दिया कि फार्म का प्रॉफिट 70,000 है बिफोर अलाउिंग एज सैलरी एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल, है ना। तो ये बिफोर अलाउिंग ही होना चाहिए। अगर इन केस अगर ऐसे होता इज 70,000 आफ्टर अलाउिंग एज सैलरी एंड इंटरेस्ट एंड कैपिटल या कुछ भी, तो उसको निकालते सेपरेटली, ए का सैलरी कितना है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना है, और उस अमाउंट को तुम्हें प्रॉफिट के साथ ऐड करके जो आएगा, मतलब बिफोर चार्जिंग जो अमाउंट आएगा, बिफोर अलाउइंग जो अमाउंट आएगा, उसके ऊपर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इन सिंपल, रिमेंबर दैट यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन and you have to use that profit and you have to show the distribution. If it is not distributed, it's very good. If it is distributed or any one item is distributed, you add the amount on that particular item to the profit and then you start the profit and loss appropriation account, ठीक है। कोई भी आइटम अगर पेमेंट हो चुका है तो उसको ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू करना है, और अगर नहीं हुआ है that means if it is before paying any expenses, that is very good, you start with that. So first one, by profit brought down 70,000. Now the distribution starts. We have seen the first one that A and B will get interest and capital at the rate 10% per annum. So 10% of 5,000, 50,000 is 5,000 and 40,000 is 4,000. So A will get 5,000, B will get 4,000. Okay. So total comes to 9,000. Then there is salary to A. A is entitled a salary of 500 per month. So 500 into 12, 6,000 rupees. So two partners salary, that is salary to A, 6,000 rupees, 500 into 12. Clear? And there is no other things to be paid? Yes. So only the thing is that profit will be distributed between A and B in 3:2 ratio. So what is the profit? 70,000 minus 9,000 minus 6,000. So the total is 65 40 sorry 55,000. The 55,000 amount will be distributed in the ratio 3:2. So कैसे होगा? 3:2 मतलब 55,000 into 3 by 5, so it comes 33,000, and 55,000 into 2 by 5, it comes 22,000. So this is how the profit is distributed among the partners. Okay, just showing you the working note here. I hope all of you have understood this part. Okay, so this much we'll keep in this video. In the next video we'll learn more about the partnership, basic of partnership form. Okay, till then, bye bye, take care.